Good morning, students. So let's start with the third lecture in the series. What we have seen in the last lectures is the liquidity ratios and then second kind of ratios, that is capital structure or leverage ratios. Today we are going to see the third category of the ratio, which is very important, and that is profitability or income ratios. Students, we know that every business is always running for earning more and more profits, rather for maximizing wealth. That is what the intention of any business is there. So we are supposed to calculate all these ratios to measure the profitability in terms of number one, the profit in terms of turnover or sales, and number two, the profit in terms of investment done by the business, that is total capital employed by the business. It may be either owned capital or it may be owned plus borrowed capital. So that is what the criteria. So let's see the profitability ratios. So as I told you, we are supposed to see two category of ratios here: profitability ratios, and these ratios we are going to measure in relation to sales or turnover, that is number one. So that is the criteria number one, profitability in relation to turnover or sales. That is criteria number one. And criteria number two, profitability in relation to investment done by the owner or business. And this investment we are going to categorize as nothing but capital employed. ये investment को हम क्या बुलाएंगे students? Capital employed. So these two ratios we are going to see. So let's see the profitability ratios, students. The background is given that main objective of every business is to earn profits. A business must be able to earn profits or adequate profits in relation to the risk and capital invested in it. So it is again clearing both the concepts there, that the profitability is measured in terms of number one, sales or turnover, and number two, in terms of capital invested or investment done by the owner of the business. The efficiency and success of the business is obviously measured in terms of these profitability ratios, obviously. So that we are going to see. So let's see all these ratios, my dear. Now few basics are given here. Profitability ratios are calculated for what? Obviously there are different kind of profits and they are calculated to see the efficiency of the business with which business is running. So is the firm earning adequate profit? That is number one. Number two, what is the rate of gross profit and net profit? Now what is gross profit, what is net profit? That we have already seen. Gross profit is nothing but the total turnover of the business minus only direct expenses. So that will give you the gross profit. Whereas net profit is nothing but the total sales or total income of the business minus direct as well as indirect expenses and losses of the business. So that is going to give you the net profit. Number three is what is the rate of return on capital employed of the firm? That is what number three. And what is the rate of return on shareholders funds? Total shareholders funds, that is equity plus preference, absolutely there. And what is the EPS? That is earning per share. So these all answers we are going to get out of these profitability ratios. So let's see them one by one. So first one, profitability ratio can be determined on the basis of sales or turnover, and that we can see here. So या तो sales के basis पे हम इसको measure करेंगे, या तो investment के basis पे बेटा इसको हम earn करेंगे, इसको learn करेंगे, and that way around. Let's see all these ratios. So number one, profitability ratio based on sales or turnover. अगर based on sales or turnover पे देखी जाए तो बड़े simple ratio है, चार ही ratio है. Number one is gross profit ratio, number two is net profit ratio, number three is operating profit ratio, and number four is operating ratio. So these four ratios we are going to see here, students. So number one, gross profit ratio, very simple. The formula you can see, this ratio shows the relationship between gross profit and net sales of the business. So how to calculate it? The GP ratio is simply gross profit divided by net sales whole multiplied by 100. So that is how this ratio is calculated. So do remember, students, net sales is calculated always as total sales minus return inward or sales return, because sales return is the amount which has been returned by the customers. Sales return is the sales which has been returned by the customers back to the business, as those are found defective in nature, or those are not matching with the requirements, or those are excess in quantity. तो जब भी हमें टोटल सेल्स निकालना है, जब भी हमें नेट सेल्स निकालना है, सॉरी, तो हमें टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड माइनस करना पड़ेगा हर फॉर्मूले में. तो वही दिया है स्टूडेंट्स, दैट यू कैन सी हियर, नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. नाउ यू मे बी हैविंग अ डाउट कि टोटल सेल्स मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों ले क्या? यस, because we believe that
business is always going to be done on cash basis or credit basis, that doesn't matter. तो दोनों को ऐड करना है बेटा. टोटल सेल्स मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल्स लेना है, उसमें से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड माइनस करना है, तो बच्चे वाला आपका रहेगा नेट सेल्स. तो सेल्स रिटर्न को हम क्या बुलाते हैं? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, डू रिमेंबर, हमने वैसे अकाउंट्स में बहुत बेसिक शुरुआत में ही पढ़ा है, सेल्स रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो इसको माइनस करना है. सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का. इट इज सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100. नेट प्रॉफिट रेशियो का भी सिंपल फॉर्मूला बेटा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100. And obviously these figures are given in the income statement of a business or profit and loss account of the business, and these basically shows the efficiency of the business there. Significance gross profit का क्या है? Obviously it shows the amount of gross margin or gross profit available with the business, so that the business can come to know that what is the percentage of gross margin with the business or gross profit with the business. Just it is given there. This ratio measures the margin of profit available with the business on sales. The higher the gross profit ratio, obviously the better it is. No ideal standard is fixed. याद रखिए बेटा, पूरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कोई स्टैंडर्ड नहीं है. अब प्रॉफिट ऐसी बात है कि जितना ज्यादा है उतना बेटर है. कौन चाहेगा कि प्रॉफिट ज्यादा ना हो, है ना? So that is how all profitability ratio doesn't have any standard, doesn't have any ideal. The ideal is only that higher the profitability ratio, much it is better. That is what given here. But the gross profit ratio should be able to cover or should be adequate enough to cover all the expenses of the business, operating expenses as well. Along with that, depreciation, interest on loans, dividend, and creation of reserves. So that is what given, that no ideal standard is fixed for this ratio, but the gross profit ratio should be adequate enough not only to provide for operating expenses or cover for operating expenses, but also to provide for depreciation, interest, along with that dividend and creation of reserve. That is what given. So higher is the gross profit, much it is better. That one need to remember. Do remember the formula is gross profit upon net sales whole multiplied by 100, whereas net sales is equal to sales minus sales return. So quite simple. Second is net profit ratio that you can see on the screen here. This ratio shows the relationship between net profit and sales, and how it is calculated, students. It is net profit upon net sales multiplied by 100. Again, net sales is nothing but total sales of the business minus sales return or return inward. Same formula there. And this is also called as operating net profit as such, because net profit and operating net profit is one and the same thing, whereas they have explained that is how to calculate operating net profit. Obviously it is given in the income statement of P&L, but still for your reference they have given the formula, that is gross profit minus all kind of operating expenses along with office and admin, selling and distribution, promotion expenses like advertising, selling, sales promotion, all these will be included. Along with that, non-operating expenses as well, like depreciation, loss on sale of land and building, plant and machinery, all these will be covered there. So that is what given students. Office and admin expenses, selling and distribution expenses, discount, bad dates, interest on short-term loan, etc. all will be included. All in all, the simple formula to calculate net profit ratio is net profit upon net sales whole multiplied by 100, whereas net sales is equal to total sales minus sales return. And do remember, students, that this net profit and gross profit is always given in the income statement or profit and loss account. And along with that, do remember the standard for any kind of profitability ratio is higher the ratio, better it is. So significance is given. This ratio measures the rate of growth of net profit or earned on sales. It helps in determining the overall efficiency of the business. ये business को help करता है overall efficiency calculate करने में. An increase in the ratio over the previous year obviously shows improvement in the overall efficiency and profitability of the business. Now this is always a common thing, my dear. Business is going to compare its result as compared with the last year. तो अगर आपका last year gross profit ratio था 60%, current year 65% है, तो obviously current year it is better. Whereas last year your net profit ratio was 45%, current year it is 50%. Again, your current year is better. That way around you can compare your profitability along with your own performance in the last year, and that is how the indicator of good profits of the business. So this is what gross and net profit, my dear. Third is operating ratio, that is given to all of us.
Operating ratio considers only operating expenses. Now here, the concept of operating expenses and non-operating expenses need to be very clear. Now there are two kinds of operating expenses, my dear. One is direct expenses, another one is indirect expenses. Now what is direct expenses? The expenses without which the product cannot be produced. For example, purchase of raw material, payment of wages, payment of all direct expenses like coal, gas, light, fuel and water, without which the production is impossible. Carriage inward is part of that, that is transportation expenses on purchases of raw material. So do remember students, operating expenses में दो तरह के expenses आते हैं, एक direct expenses without which product cannot be produced, and another one is indirect expenses, my dear, that is the expenses without which the product is not sellable into the market, like office and admin expenses, selling and distribution expenses, and promotion expenses as well. So all these are combined and then this is deducted from the sales to calculate operating profit. अभी क्वेश्चन यही रहेगा आपके दिमाग में कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर, माय डियर, नंबर वन इट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते, हम इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बुलाते हैं. Reason is that depreciation is a non-cash expenditure and as such it is just a provision which is kept in the business for purchasing a new asset when existing asset becomes outdated or out of use. Depreciation a non-cash expenditure hai. It is a kind of reserves which has been created for acquiring or purchasing a new fixed asset when existing fixed asset is becoming outdated. So depreciation provision है my dear, non-cash expenditure है और ये operating expenditure नहीं है. और क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है along with depreciation? Obviously income tax, क्योंकि वैसे भी income tax is a charge against profit, it is not an expenditure. Along with that interest on loan, क्योंकि आपने आपके लोन पे सर्विसिंग करने के लिए इंटरेस्ट दिया है, it is not an expenditure, it is rather a mandatory cost which need to be paid on the capital which is raised. तो इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीशिएशन ये नॉन ऑपरेटिंग हुए बेटा. उसी के साथ loss on sale of any fixed asset, loss on sale of any investment, all these are non-operating expenses or losses. Why it is non-operating? क्योंकि ये बिजनेस के प्रोडक्शन या सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको नॉन ऑपरेटिंग बुलाया जाता है. तो याद रखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है: इंटरेस्ट, डेप्रीशिएशन, टैक्स, along with that loss on sale of investments और loss on sale of fixed assets, ये भी नॉन ऑपरेटिंग में गिने जाते हैं बेटा. तो देखिए ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है. ऑब्वियसली हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने, और याद रखिए जैसे मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंसेस आते हैं बेटा. वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये दोनों को ऐड करेंगे और आपके ग्रॉस प्रॉफिट और आपके सेल्स में से इसको माइनस करेंगे. बड़ा सिंपल फंडा है. तो ये देखिए कैसे उन्होंने फॉर्मूला दिया है. So this ratio measures the proportion of an enterprise cost of sales and operating expenses in comparison with the sales. तो फॉर्मूला क्या दिया बेटा? COGS plus operating expenses whole divided by net sales multiplied by 100. अभी COGS टर्म क्या है? COGS is nothing but direct expenses my dear. That is cost of goods sold. उसका कंपोजिशन उन्होंने दिया है, नीचे आप देख सकते हैं. Where COGS is equal to और cost of goods sold is equal to, कैसे निकालना है उसको? Opening stock of raw material plus purchases of raw material plus wages or carriage inward, that is transportation expenses on purchases of raw material plus wages plus any other direct expenses like coal, gas, light, fuel and water minus closing stock. क्योंकि हमें पता है जब भी ओपनिंग स्टॉक होता है वहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी होता ही है. तो ये COGS निकालने का फॉर्मूला है बेटा. या तो आपको डायरेक्टली दिया जाएगा COGS या तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है. So COGS is simply nothing but the combination of all direct expenses, obviously minus closing stock. So it is opening stock plus purchases of raw material plus wages plus carriage inward plus all other direct expenses minus closing stock. ये आपको COGS दे देगा. उसमें क्या ऐड करना है बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, जैसे मैंने आपको बोला, that is office and admin expenses, entire P&L debit side except tax, interest, depreciation, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इसको हमें ऐड नहीं करना है. क्यों? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए. फिर से ध्यान दीजिए बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस विदाउट विच प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विदाउट विच प्रोडक्ट इज नॉट सेलेबल इनटू द मार्केट. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एडमिन और ऑफिस एक्सपेंसेस,
सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट में क्या क्या आता है, पूरा COGS दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें आएगा परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद रखिए, तो ये दिया है COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कंपोजिशन जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दोनों को ऐड करना है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, उनको डिवाइड करना है बाय नेट सेल्स और होल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो हर बार इनटू 100 मतलब ऑल दीज रेशियोज विल बी कमिंग इनटू परसेंटेज माय डियर। सो इंपॉर्टेंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर दिस। आगे दिया है उन्होंने ऑपरेटिंग रेशियो, देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उन्होंने क्या दिया है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डिस्काउंट प्लस बैड डेट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। ओके, इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड हियर एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, विल हैव अ नोट ऑन दिस, डोंट वरी एज ऑफ नाउ। इसको थोड़ा सा मैं रेड करके रखता हूं ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता पाऊं इसके बारे में। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो आर इंटररिलेटेड। अगला रेशियो बेटा, तो हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो देखा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। उसके बाद हमने देखा ऑपरेटिंग रेशियो, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला उसका था। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो आर इंटररिलेटेड है, दोनों में क्या है, टोटल ऑफ बोथ दीज रेशियोज विल बी 100। ये करेक्ट है बेटा, क्यों, क्योंकि एक बता रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, दूसरा बता रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। और फॉर्मूला देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, सिंपली इट इज EBIT और PBIT, उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुलाते हैं बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो EBIT और PBIT अपॉन नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग रेशियो का सिग्निफिकेंस देखिए बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो इज मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। The ratio indicates the extent of sales that is absorbed by COGS and operating expenses. So lower the operating ratio, it is better because it will leave higher margin of profit on sales. याद रखिए बेटा, इसमें प्रॉफिट वर्ड नहीं है, ये ऑपरेटिंग रेशियो है। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, हायर इट इज बेटर इट इज। लेकिन जहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो है, यहाँ पे ये बताता है कि ये जितना कम है उतना बेटर है, क्योंकि जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कम रहेगा उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। इसीलिए ऑपरेटिंग रेशियो लोअर है तो बेटर है, क्योंकि ये बताता है कि आपका जो भी सेल्स है दैट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब ऑल योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितना आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा। लेकिन हम रेशियो कौन सा निकाल रहे हैं बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो। तो याद रखिए एक्सेप्शन है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों हायर इट इज बेटर इट इज स्टैंडर्ड है, रादर ऑल प्रॉफिटेबिलिटी हायर इट इज बेटर इट इज। बट ऑपरेटिंग रेशियो में लोअर इट इज बेटर इट इज, क्योंकि ये कॉस्ट एब्सॉर्ब कितनी कर रहा है ये बताता है, और कॉस्ट जितनी कम है उतनी बेटर है बिजनेस के लिए। तो हमने 4 ही रेशियो देखे बेटा। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तीसरा हमने ऑपरेटिंग रेशियो देखा, दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। और लास्ट हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखा, जहां पे फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। अभी हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं बेटा, और याद रखिए ये चारों रेशियो में सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो एक्सेप्शन है, लोअर इट इज बेटर इट इज। बाकी तीनों रेशियो में हायर इट इज बेटर इट इज है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस। सो दैट इज व्हाट समथिंग डिफरेंट वन। तो ये थोड़ा सा अलग है अभी, क्योंकि हमने इसके पहले की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो देखे बेटा, दैट वाज सीन इन कंपैरिजन विद द sales or turnover. Now we are going to see in relation with the sales of the business, in relation with total investment of the business, in relation with capital employed of the business. So let's see what is given here. देख सकते हैं यहाँ पे दो कैटेगरी की है बेटा, एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं बेटा, तो इसमें दोनों तरह के कैपिटल आते हैं, जो मैंने बेसिक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल।
और जब हम सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स की बात करते हैं, मतलब इसमें बोरोड कैपिटल नहीं आता, इसमें कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं आएगा, बॉन्ड्स डिवेंचर्स नहीं आएंगे, पब्लिक डिपॉजिट भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम सिर्फ बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड्स की, तभी बोरोड कैपिटल नहीं आएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वहां पे तो दोनों आ गया बेटा, ओन्ड कैपिटल भी आया और बोरोड कैपिटल भी आया। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। सो लेट्स सी द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट डन बाय द बिजनेस और इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस। तो सबसे पहले क्या दिया बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी। और आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया है, एंड द पैराग्राफ सेज दैट these ratios reflect the true earning capacity of the resources employed in the enterprise। ये रेशियोज क्या बताते हैं कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी है इन कंपैरिजन विद द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस। Sometimes the profitability ratios based on sales are high, whereas profitability ratio based on investments are low। ऐसा हो सकता है कि टर्नओवर के कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट कम है। That is possible because it differs from business to business. Along with that, it says that since the capital employed is to earn profit, these ratios are a real measure of the success of the business and managerial efficiency. Why the business is started by the owner, why the capital is invested to earn profit, and that is how it is saying that apart from sales or turnover, rather capital invested or investment done by the owner is the real measure of profitability of the business। इसलिए ये रेशियो लर्न करना बहुत जरूरी है। सेल्स के साथ तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपने कितना पैसा लगाया और उस पर आपको रिटर्न कितना आ रहा है। हम बहुत बार आजकल फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा आरओआई बोलो और फिर आगे चलो, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसी से ये रिलेटेड है बेटा कि आपने कितना पैसा लगाया और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आरओसी, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड इट इज द ऑब्वियसली मेजर ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस calculated by the profit earned before interest and tax। आप बोलेंगे before interest and tax क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको मैंडेटरी देना है as it is the cost which need to be paid on the capital which is borrowed। tax is the charge against profit। तो इनको आप एक तरह से बाजू में रख सकते हैं बिकॉज ये एक तरह का प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए तो आपको कंपलसरी ये सारी चीजें देनी ही पड़ेगी। इंटरेस्ट है या टैक्स है, दिस इज नीड टू बी गिवन ऑलवेज। सो दैट इज हाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बनता है बेटा, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं तो दोनों कैपिटल आएंगे, ओन्ड कैपिटल आएगा मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर प्रीमियम प्लस नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, बट माइनस फिक्टिशियस असेट माय डियर। यही दिया होगा, देख सकते हैं आप, देखिए इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस ऑल रिजर्व प्लस नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस प्लस अब बोरोड कैपिटल उन्होंने ऐड करना चालू किया, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स। Along with that, bonds and debentures, if public deposits are available, even that is added, but fictitious assets should be deducted, such as preliminary expenses or net loss, as well as non-operating assets like investment made outside the business। ये भी सारा माइनस करते हैं हम when we are calculating this capital employed। जब capital employed हम ऐड कैलकुलेट करते हैं तो याद रखिए बेटा हमें ओन्ड और बोरोड को ऐड करना है, बट फिक्टिशियस असेट्स को हमें माइनस करना है। और कुछ नॉन ऑपरेटिंग तरह के असेट्स होते हैं जो यहाँ पे दिए है, बट यूजुअली दैट इज वेरी एडवांस कंटेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल माइनस एनी टाइप ऑफ फिक्टिशियस असेट्स लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और नेट लॉस। याद रखिए बेटा फिक्टिशियस असेट क्या क्या है, एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और दूसरा है नेट लॉस। आई विल गिव अ नोट ऑन फिक्टिशियस असेट एज वेल so that you can understand it better। Advantage of return on capital employed, ROC क्यों पढ़ना चाहिए? Since profit is the overall objective of any business, we all know this ratio is a barometer of the overall performance of the enterprise। ये ratio barometer है overall performance का, क्योंकि EBIT upon capital employed into 100 आप निकाल रहे हैं। It measures how efficiently the capital is employed in the business and it is being used। तो ये हमें देखना है। Second, even the performance of two dissimilar firms may be compared with the help of this ratio। अलग अलग फर्म का भी कंपैरिजन किया जा सकता है बेटा ये पर्टिकुलर रेशियो के साथ, क्योंकि ये बताता है कि ओवरऑल इफिशिएंसी बिजनेस का क्या है इन टर्म्स ऑफ ईबीआईटी एंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड।
So not necessary you can compare only two small some similar businesses, rather dissimilar businesses can be compared with this particular ratio. Number 3, the ratio can be used to judge the borrowing policy of the enterprise. कि ओन्ड कितना है, बोरोड कितना है, ये तो समझ में ही आ रहा है क्योंकि दोनों का ऐड कर रहे हैं, फिक्टिशियस असेट माइनस कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से. करेक्ट है बेटा? राइट? यस. दिस रेशियो हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स. नए प्रोजेक्ट आपको लेने हैं तो ये भी रेशियो आपको हेल्प करेगा. किस तरह से? द न्यू प्रोजेक्ट्स विल बी कमेंस्ड only if the rate of return on capital employed in such project is expected to be more than the rate of borrowing. नए प्रोजेक्ट हम तभी चालू करेंगे बेटा अगर हम जो कॉस्ट पे बोरो कर रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न हमें मिल रहा है. तो हम बोरो कर रहे हैं 15 पे और हमें रिटर्न 30 या 40% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर इट. So that is what the major again as far as this particular thing is concerned. Next to that, this ratio helps in affecting the necessary changes in financial policies of the firm. Obviously, अगर आपका ROC कम है तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, ज्यादा है तो along with that, thinking on that line, the business decision can be taken further. Lenders like bankers and financial institutions will always see this ratio to determine whether the enterprise is viable for giving credit or extending loans or not. ये रेशियो क्रेडिटर से भी देखा जाता है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, while granting loans, ताकि आपको लोन दिया जाए या नहीं, ये भी उनको देखना है. And at the same time, with the help of these ratios, shareholders can also find out whether they will receive regular and higher dividend or not. क्योंकि अगर आपका ROC अच्छा है तो ये बताता है कि yes, company is in a good position and they can pay higher dividend and that too on timely basis. ये अगर कम होगा तो फिर मुश्किल हो सकती है. याद रखिए बेटा, पहला फॉर्मूला हमने देखा for profitability in relation to investment or capital employed, that is nothing but EBIT or PBIT or operating profit whole divided by capital employed and whole multiplied by 100, whereas capital employed is owned capital plus borrowed capital minus fictitious asset. दूसरा देखते हैं बेटा, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स. जैसे मैंने आपको बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल कैपिटल दैट इज ओन्ड प्लस बोरोड कैपिटल, लेकिन जब शेयर होल्डर्स फंड्स की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं, इसमें बोरोड कैपिटल नहीं आता. अब शेयर होल्डर फंड में क्या आता है हमें पता है, ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल, ऑब्वियसली माइनस फिक्टिशियस असेट. फिक्टिशियस असेट इज द असेट्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू द ओनर्स ओनली, इसलिए फिक्टिशियस असेट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से माइनस होना चाहिए बेटा, प्रेफरेंस से नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस तो शेयर होल्डर्स है, ओनर्स नहीं है. ओनर कौन है बिजनेस का? इक्विटी शेयर होल्डर्स है, कॉमन शेयर होल्डर्स है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है. तो याद रखिए, फिक्टिशियस असेट इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में माइनस होना चाहिए या इक्विटी शेयर कैपिटल से माइनस होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शोज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फंड सप्लाइड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स एंड शेयर होल्डर्स. बट ये दोनों को मिला के आपका ROC बताता है कि EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स क्या बताता है? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स मेजर ओनली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. तो ये डिफरेंस है बेटा, शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया और उस पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स बताता है. अब उसमें इक्विटी भी आया और प्रेफरेंस भी आया. देयर आर सेवरल मेजर्स टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लेट्स सी देम. रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले हमें देखना है, यानी कितना पैसा टोटल शेयर होल्डर ने लगाया है. एंड इन दैट केस वी कैन सी इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओन्ड प्लस ओन्ड कैपिटल ओनली, दैट इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस. बट ऑब्वियसली जब भी इक्विटी की बात आती है, फिक्टिशियस असेट माइनस करने, फॉर्मूला देख सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशियो. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, तो सेम इज गिवन एंड इट इज डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स. और टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब है क्या बेटा? दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस एंड माइनस फिक्टिशियस असेट. वही दिया होगा, देख सकते हैं टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स में आपने बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल स्क्रीन पे प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस all reserves plus profit and loss account credit balance absolutely minus fictitious asset. तो फॉर्मूला क्या बना टोटल? that is PAT, EAT or net profit, that is profit after tax, earning after tax or net profit whole divided by total shareholder funds and whole multiplied by 100. जिसमें total shareholder funds का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, equity plus preference plus all types of reserve plus profit and loss account credit balance, that is net profit minus fictitious asset. That is what
रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसको बुलाते हैं बेटा, और रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स भी इसको बुलाते हैं। दैट इज हाउ इट इज गिवन। इसको नेटवर्थ बुलाने का तो मतलब नहीं आता मेरे ख्याल से। इट इज ऑलवेज बेटर टू कॉल इट एज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। नेटवर्थ मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स आता है बेटा, तो मेरे ख्याल से इसको नेटवर्थ बुलाना गलत है, तो इसको नेटवर्थ मत बुलाइए, इसको सीधा सादे शब्दों में रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स बुलाइए। दैट इज मच बेटर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नीचे रहेगा, so this is the correction out of the notes there. And obviously what the ratio reveals that how much is the profit generated over the total shareholders funds, that is equity as well as preference. So that is what the significance. And for all profitability ratio, as I told you earlier, higher the ratio much it is better. सारे profitability में हमने यही देखा बेटा, जितना रेशियो हायर रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, एक्सेप्ट ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो शोज दैट how much are the expenses absorbed by the cells in terms of direct and indirect expenses. चलिए आगे चलते हैं। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड दिया है, तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। ऊपर टोटल शेयर होल्डर्स था, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है, मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं आएगा। अदरवाइज इट इज सेम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस असेट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, फिक्टिशियस असेट ऑलवेज बिलोंग टू द ओनर्स ओनली, तो इसीलिए दिया बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ देयर फंड्स इन द बिजनेस, एंड द फॉर्मूला इज पैट नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स होल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे मैंने आपको बोला इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, आप सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे हम ऊपर के, जैसे इसमें टोटल शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस लिया था, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी लेंगे बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व प्लस नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस असेट। जैसे सिग्निफिकेंस मैंने आपको बोला, हायर इट इज बेटर इट इज, बट इट इज गोइंग टू सी हाउ मच इज द रिटर्न अर्नड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कितना परसेंटेज छापा है खुद के लिए या कितना उनके लिए बचा है, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। सो दैट इज हाउ दिस रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस। तो ये यहाँ पे दिया बेटा सिग्निफिकेंस में कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड्स के पैसे पे आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। So that is what it is given here, and that we can see here. It is a true measure of the efficiency of the business in terms of equity shareholder funds. So in terms of equity shareholder funds अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पैसा बन पा रहा है। So फर्क क्या है, ऊपर था टोटल शेयर होल्डर फंड्स और यहाँ पे है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। टोटल शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस भी आता है, जबकि जब आप इक्विटी में जाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में सिर्फ इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस का नामो निशान नहीं होगा। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर सम टाइम दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, सेम आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर्स, और इसी में हम सारे रिजर्व्स ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऐड करते हैं, और उसी के साथ हम फिक्टिशियस असेट माइनस करते हैं। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टोटल शेयर होल्डर फंड्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। सो द सेम इज गिवन बाय डी हियर, और देख सकते हैं आप this ratio measures how efficiently the equity shareholder funds are being used in the business. It is a true measure of the efficiency of the management since it shows what the earning capacity of the equity shareholders funds. If the ratio is high, obviously it is better because in such a case equity shareholders may be given a higher dividend. ये जितना high है उतना better है। सेम बेटा मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर हायर इट इज बेटर इट इज। कौन नहीं चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। So that is how all profitability ratios are believed to be on good to be higher side. Earning per share formula देखते हैं, next one which is given here into this sequence. Then it is given dividend per share, dividend payout and P ratio. Now these will be applicable obviously when we are going to see the fundamentals of the company. वरना हमारे लिए तो यहाँ तक काफी है, हम EPS तक ही देखेंगे बेटा। As far as the management accounting perspective is concerned, हम यही तक देखेंगे। So EPS will be our last ratio here. So what we have seen, the first one is return on capital employed ratio. Formula is EBIT upon total capital employed whole multiplied by 100. जबकि EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुलाते हैं, PBIT को ही प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुलाते हैं, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद हमने देखा रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स। फॉर्मूला इज पैट नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, सारा रिजर्व आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा,
एज वेल एज शेयर प्रीमियम आएगा माइनस 50 शेयर असेट होल मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद हमने देखा कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी वाले ने पैसा कितना लगाया और उसको रिटर्न कितना हो रहा है। फॉर्मूला है पैट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स, तीनों एक ही बेटा। तो सिर्फ नेट प्रॉफिट बोलो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। तो या तो पैट बोलो या तो नेट प्रॉफिट बोलो या तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो। न्यूमरेटर में होल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बात सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स की आ रही है तो यहाँ पे प्रेफरेंस को ऐड नहीं करेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व प्लस नेट प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस माइनस 50 शेयर्स असेट, ये फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। और अभी चौथा फॉर्मूला हम देखते हैं दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज ईपीएस। Now do remember students, earning is for equity shareholders. हमने बेसिक लेक्चर में देखा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अर्निंग नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट ओनली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको रिटर्न एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, और उनको पैसा कब मिलेगा। तो उनको अर्निंग इस तरह से होता है बेटा, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दूं। ये देखिए, दिस इज हाउ द थिंग्स गोइंग ऑन। सबसे पहले आता है आपका ईबीआईटी। आप ईबीआईटी से माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। तो क्या आएगा बेटा, ईबीटी। एम आई राइट स्टूडेंट्स, यस और नो? यस, ईबीटी माइनस टैक्स, फिर आएगा आपका पैट, इसी को हम नेट प्रॉफिट बुलाते हैं, इसी को हम अर्निंग आफ्टर टैक्स बुलाते हैं। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा बेटा, दिस नीड टू बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, दीज आर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है। अब इसमें से आप कुछ देंगे कुछ बचाएंगे, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ तो बचाना चाहिए फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, फॉर अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस। दैट इज हाउ दिस इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू कैलकुलेट ईपीएस। जब भी ईपीएस निकालना है बेटा तो ये बहुत जरूरी है कि आप नंबर ऑफ शेयर्स से उसको डिवाइड करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएस का फॉर्मूला भी उसी तरह से दिया है। तो ईपीएस कैसे निकलता है देखिए बेटा, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस कीजिए, ईबीटी आएगा, ईबीटी से टैक्स माइनस कीजिए, नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कीजिए। Now this is the amount which is applicable for earning available for equity shareholders. अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ये कंपनी की पॉलिसी है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिटेन करना है, बट हम ईपीएस इसी से निकालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो मैंने नीचे आपको बताया बेटा। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि पर शेयर हमें अर्निंग निकालना है। तो ये देखिए, PAT minus preference dividend divided by number of equity shares, or earning available for equity shareholders whole divided by number of equity shares. So this is what the formula for EPS, my dear. And here we come for the end of this particular category, that is profitability ratio. So just sum up करता हूँ, क्या क्या देखा हमने, profitability ratios in relation to sales or turnover, that is category number 1. And every business is done only for earning प्रॉफिट्स। पहला रेशियो हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी और पीबीआईटी होल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और याद रखिए, नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। और चौथा रेशियो हमने देखा इस कैटेगरी में, दैट इज प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स और टर्नओवर, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। Formula is cost of goods sold plus operating expenses whole divided by net sales and whole multiplied by 100। यहाँ पे cost of goods sold कैसे निकालते हैं, that is opening stock of raw material plus purchases of raw material plus wages plus carriage inward plus all other direct expenses minus closing stock, and operating expenses में आएगा admin and office expenses, selling distribution and promotion expenses। This is the combination of operating ratio। और सारे प्रॉफिटेबिलिटी में जैसे मैंने आपको बोला, ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर बिलीव्ड टू बी गुड ऑन हायर साइड। सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो है जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोअर भी रहा तो बेटर है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों हायर रहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लोअर बेटर रहेगा, बिकॉज दिस शोज दैट हाउ द सेल्स आर अब्सॉर्बिंग ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। ये जितने कम हो उतने बेटर है।
और उसके बाद हमने देखा बेटा प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट डन बाय द बिजनेस। उसमें पहला रेशियो हमने देखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला था ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं मतलब ओन्ड भी आएगा, बोरोड भी आएगा, मतलब इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, सारे रिजर्व आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आएगा, प्लस लॉन्ग टर्म लोन आएंगे, बॉन्ड्स आएगा, डिबेंचर आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा, माइनस 50 शेयर्स असेट, एंड दैट इज व्हाट द फॉर्मूला माय डियर। उसके बाद हमने देखा रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसका फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स होल डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर फंड्स एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। जब टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स आएंगे, इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा, साथ में सारे रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, लेकिन 50 शेयर्स असेट माइनस करेंगे। दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। नंबर 3 इज रिटर्न ऑन ओनली इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स टू सी दैट हाउ मच द ओनर्स आर गेटिंग, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर, एंड हमने फॉर्मूला इसका देखा नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स और टोटल शेयर होल्डर फंड्स के डिफरेंस की बात आती है तो दोनों में डिफरेंस यही है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में प्रेफरेंस शेयर्स ऐड नहीं करते और टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स में प्रेफरेंस शेयर्स ऐड करते हैं। और ये भी मैंने आपको बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स और इन्हीं को सारा रिजर्व, इन्हीं को सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जाता है और लॉस भी जो होता है 50 शेयर्स असेट में वो भी यही बियर करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का कॉम्बिनेशन हमने देखा, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, दैट इज नेट प्रॉफिट माइनस 50 शेयर्स असेट। और आखिरी फॉर्मूला हमने देखा दैट इज अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दैट इज पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स whole divided by number of equity shares. So that is what we have seen, students, all profitability ratio. I hope you must have enjoyed them. Next lecture we will start with turnover ratios. Till then, thank you and have a wonderful day ahead. God bless you.